तो ट्रंप का बयान आ गया है, ईरान के खिलाफ हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारा लक्ष्य खतरे को खत्म करना है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान पर अटैक को लेकर, यह पहला बयान इस अटैक के शुरू होने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमें खतरे को खत्म करना है, ईरान के खिलाफ हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब खतरा कौन है? खतरा आयतुल्लाह ख़ामेनी है? क्या राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान है? खतरा कौन? नहीं, खतरा सिर्फ आयतुल्लाह ख़ामेनी नहीं है। खतरा जो उनका विचार है वो खतरनाक है। खतरा जो है वो हिजबुल्लाह है, खतरा जो है वो हमास है। हमास और हिजबुल्लाह को पालता कौन है? हमास और हिजबुल्लाह को आर्म्स कौन सप्लाई करता है? हमास और हिजबुल्लाह को फंडिंग कौन देता है? हमास और हिजबुल्लाह को संरक्षण कौन देता है? तो इसमें बहुत साफ है कि ईरान उनको संरक्षण देता है। और किसके लिए संरक्षण देता है? ताकि जो ज्यूज नेशन है इजराइल को वो पीट सके, इजराइल को वो मार सके, इजराइल को क्षति पहुंचा सके। तो स्वाभाविक है, चूंकि इजराइल घिरा हुआ है मुस्लिम कंट्रीज से, तो उसके लिए यह स्वाभाविक हो जाता है कि कोई भी ताकत उस रीजन में वो उभर करके नहीं आए जो उसके लिए वो एक चुनौती बन करके आए या उसके लिए खतरे होकर के आए। चुनौती तक तो चलिए एक्सेप्टेबल है या डेटरेंट कैपेसिटी तक एक्सेप्टेड है, लेकिन ये तो उसके लिए बहुत खतरा, उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है। क्योंकि चारों ओर से इजराइल जो है, आप ये सोचिए ना, 32 दांत के बीच में एक जीव गिरा हुआ हो, वही स्थिति इजराइल की है। सारे ओर से उसके चारे ओर से मुस्लिम कंट्री के बीच में जो एक जीव है वही सबसे खतरनाक है। नहीं, वो आप 32 मुल्कों के बारे में, उन मुसलमान मुल्कों के बारे में सोचें, जो इजराइल को खुद अपने लिए खतरे के तौर पर देख रही है। नहीं, क्योंकि एक बयान आ गया, फिर बयान सुना देती हूँ। Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels and international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried.
They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future. तो आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुना। उन्होंने कहा कि ईरान से हमने बात करने की पूरी कोशिश की, हमने बहुत ऑफर दिए उन्हें, लेकिन उन्होंने हमारा ऑफर ठुकरा दिया और हमला करना ही हमारा अंतिम विकल्प बचा। अमेरिका ने यह दिखा दिया है कि आतंक को कभी भी हम पनपने नहीं देंगे। उन्होंने ईरान को सबसे बड़ा आतंकी समर्थक देश कह दिया और नंबर 1, अगर हम ये कहें कि नंबर 1 आतंकी समर्थक देश अगर किसी को कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो ईरान को कहा। उन्होंने कहा कि एक बात तय है कि ईरान को कभी भी परमाणु संपन्न देश वो नहीं बनने देंगे। ईरान पर हमला करना ही उनका आखिरी विकल्प था। अब ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उन्होंने अपना जो पिछला बयान दिया था, उन्होंने यही कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान वो जो की वर्ड्स है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद कर देंगे, न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। ईरान ये लगातार कह रहा था कि हम इस पर तैयार नहीं हैं। और फिर अमेरिका को जो कटा था वो तस्वीरें दिखाई दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने खतरे को खत्म करना चाह रहे हैं। ईरान हम पर अटैक करना चाह रहा था, हम ईरान को हम पर अटैक नहीं करने दे सकते और इसलिए हमने उसके ऊपर अटैक किया।